ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अगर आ रही है तो ये कैमरा ऑन करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो बीच में जो अटक जाता है ना थ्योरम, उसमें अगर थोड़ा रिपीट करना पड़ता है। कैमरा ऑन फास्ट। कैमरा ऑन। आज कितने स्टूडेंट हैं? 16, 17। कैमरा करो ना ऑन, सभी अटेंडेंस है। ओके, तो हम ये दिखाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? मुझे रिवर्स में जाना पड़ेगा। दैट एवरी सेपरेबल Banach space is linearly isometric to a quotient space of L1। तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया था, हमने लिया था X एक सेपरेबल स्पेस है, और चूंकि ये मेट्रिक स्पेस है तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट हमने कहा था हम लेंगे Bx में एक डेंस सबसेट Xn। तो फिर इसकी मदद से हमने मैप किया था डिफाइन फ्रॉम L1, आई थिंक L1 ही था, L1 to X by T of this thing is equal to summation Zi Xi I runs down to infinity। Of course I Z बने हैं, हमने यहाँ से लिए ये सीक्वेंस और इसके कंपोनेंट से लिए। तो ये करने के बाद हमने दिखाया था T of BL1 is contained in B of X। हम कन्वर्स दिखाना चाहते हैं, हम एक्चुअली दिखाना चाहते हैं T of BL1, अब हम दिखाना चाहते हैं Bx is contained in T of BL1 where this is just a unit closed ball। तो उसके लिए हमने किया था कि हमने एक एलिमेंट लिया था X belonging to Bx and we are forming a subsequence। हमने पहला subsequence मतलब subsequence of Xn। Now since Xn is dense in Bx, तो उसकी मदद से हमने एक सबसीक्वेंस ली इन दिस वे। पहला हमने लिया था, कहाँ गया वो? पहले हमने ये माना था कि norm of x can be written as 1 by 1 plus delta, where delta is a non-negative number for any x belonging to Bx। तो उसकी मदद से हमने किया था कि then I can find Xn1 such that 1 plus delta x minus xn sub 1 is less than epsilon। फिर हमने xn2 ऐसा लिया था such that 1 plus delta x minus xn sub 1 minus epsilon times, ये हम कर सकते हैं, ये हमने इससे पहले किया था, xn2 is less than epsilon cube। and फिर इसी तरह से मतलब once we do that it implies that 1 by epsilon cube, यहाँ तक हम पहुंचे थे 1 by 1 plus delta into x minus xn sub 1 minus epsilon times xn sub 2। ये जो है this must belong to Bx क्योंकि इसका norm less than 1 है। So which implies xn's are dense, right? So we can find an xn3, then we can find an xn3, then we can find actually n3 belonging to the set of natural numbers such that ऐसे हम ले सकते हैं 1 by epsilon 3 into 1 plus delta times x minus x n sub 1 n sub 1 है यहाँ पे minus epsilon times xn2 minus xn sub 3 in norm can be made arbitrarily small। So I choose epsilon, यहाँ हमने लिया है एक particular one, that is delta divided by 1 plus delta, important है। So this can be made less than epsilon, so which implies that, फिर से हमें थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इसे लिख सकते हैं 1 plus delta
into x minus xn sub 1 minus epsilon times xn sub 2 minus epsilon, what should I get? Epsilon square की cube. Just a minute. गलत किया हमने, क्यों गलत किया? क्योंकि यहाँ डिवीजन में था ना, तो कहीं मैंने शायद epsilon यहाँ, ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिखा था, वो क्या लिखा था गलत? हाँ ठीक है, ठीक ही लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था, ये ठीक है, राइट, ये भी फिर ठीक है। तो अगर मैं एप्सिलॉन क्यूब से मल्टीप्लाई कर लूं तो यहाँ बन जाएगा, तो मैं इसको एप्सिलॉन क्यूब आउट है, तो हाँ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन क्यूब, जब ये डिवीजन में आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम बाद में इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इट इज 1 प्लस डेल्टा टाइम्स x माइनस xn सब 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स xn 2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन स्क्वायर के एप्सिलॉन क्यूब, वो दिक्कत है मुझे, एप्सिलॉन्स में कुछ हिसाब में गड़बड़ हो गई। एक्चुअली यही होता है ना कि जब हम करते हैं ऐसे 1 बाय एप्सिलॉन क्यूब, जब मैंने यहाँ लिया, दैट्स ओके, तो मैंने कुछ चेंज किया क्या यहाँ पे, एप्सिलॉन क्यूब माइनस इस लेस देन एप्सिलॉन लिया, मैं ऊपर लिया था मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर, ये तो दिक्कत की बात है। अच्छा, एप्सिलॉन मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, कुछ मैंने एप्सिलॉन में गड़बड़ कर दी। एनीवेज 1 बाय एप्सिलॉन क्यूब, इसको फिर से चेक करेंगे, राइट, तो 1 बाय मैंने लिया था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स उसके बाद लिया था मैंने जस्ट 1 बाय एप्सिलॉन माइनस xn माइनस 2, ओह हाँ, यहाँ मैंने गलती की है, ये दूसरे पेज पे जब जाते हैं ना, पुराना वाला है नहीं हमारे पास, इरेजर कहाँ गया, हाँ आई थिंक ये था यहाँ पे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या था ये, एप्सिलॉन क्यूब, अरे क्या हो रहा है, तो फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसमें तो कोई शक नहीं, तो इसका मतलब 1 बाय एप्सिलॉन यहीं से करना पड़ेगा हमें, ये पिछले पेज का ही नुकसान होता है, ये बोर्ड होता या इसका वो सेव रहता तो अच्छा था। ओके, अब मैंने क्या किया कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, फिर से ये लाइन भी हटा देते हैं, इट मीन्स दैट 1 बाय एप्सिलॉन into 1 plus delta into x minus x n sub 1 जो है whole को multiplication है इस time, it belongs to bx. Now we choose n2 belonging to the set of natural numbers such that what do I have, 1 by epsilon into 1 plus delta times x minus x n sub 1 minus x n2 in norm is less than एप्सिलॉन स्क्वायर है, हाँ ठीक है, एप्सिलॉन आया था पहले, अब एप्सिलॉन स्क्वायर आना चाहिए, which means that हाँ, अगर मैं एप्सिलॉन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, which means that 1 by epsilon cube into 1 plus delta x minus x n sub 1, ठीक है, minus 1 by epsilon square x, यही गलती थी, belongs to bx, right, हाँ
क्योंकि मैंने शायद थ्रू आउट क्यूब लिया था, यहाँ स्क्वायर ही आएगा क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन है, यहाँ नहीं है. So therefore again we can choose n3 belonging to the set of natural numbers such that 1 by epsilon cube into 1 plus delta times x minus x n sub 1 minus 1 by epsilon square x n sub 2 minus x n sub 3 of c. This is less than epsilon, which implies that अगर epsilon cube से throughout multiply करेंगे 1 plus delta into x minus x n sub 1 minus epsilon cube से throughout multiply किया तो यहाँ आना चाहिए epsilon times xn2 minus epsilon cube times xn sub 3 is less than epsilon raised to 4. Okay, continuing like this we can go on and on. Continuing like this we find a subsequence. We find a subsequence x and k such that 1 plus delta times x minus x and 1 minus epsilon, हमें माइनस को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, प्लस epsilon times x and 2 plus epsilon 3 times epsilon cube times x and 3 plus so on and so forth. हम जाएंगे k तक. So let me call it epsilon k raised to n minus 1 x sub n k minus 1. This is less than epsilon raised to power. यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 है तो 4 है, ठीक है. यहाँ इससे एक ज्यादा है, नहीं 2 ज्यादा है ना. मैंने थोड़ा सा क्या किया. ओके, दिस हैज टू बी लेस देन एप्सिलॉन रेज्ड टू पावर k. इसमें एप्सिलॉन में कुछ एप्सिलॉन क्यूब से मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्यूब ही आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा. कुछ तो ठीक है, ठीक ही लग रहा है. एप्सिलॉन में कुछ हिसाब में गड़बड़ तो नहीं होगी. एप्सिलॉन स्क्वायर आई थिंक, इसे वापस जाना पड़ेगा. ओके, इसके साथ एप्सिलॉन ही आना चाहिए. एप्सिलॉन स्क्वायर था ना इधर, 1 बाय एप्सिलॉन स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एप्सिलॉन 3, तो यहाँ 3 है. 1, इसके साथ 1 क्यों है, ये तो गड़बड़ है. एप्सिलॉन ने बड़ा परेशान किया. So this is less than epsilon. Epsilon square, which means that this is epsilon cube. तो फिर मैंने डिवाइड किया 1 by epsilon square था कहीं पे. Anyway, अगर कुछ होगा तो फिर तो मुझे पूछोगे नेक्स्ट टाइम कि सर यहाँ एप्सिलॉन में कुछ. ये बार बार अगर मैं पीछे घूम जाऊंगा ना, हमारा फिर से हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि ये इसके साथ मैच कैसे हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए. एक्चुअली यहाँ होना चाहिए nk और इसका एक पावर कम होना चाहिए. तो आई थिंक यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर होना चाहिए. वो बाद में मैं देखूंगा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन है, यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर है. लेट्स मेक इट लाइक दिस. एनीवे, ये है सही. अब कहाँ पे हमने कोई एप्सिलॉन मिस किया वो बाद में देखेंगे, ठीक है. तुम जब बुक पे इसको फेयर करोगे तो मुझे बताना कि कहाँ पे, मैं भी इसको चेक करूंगा. Where of course 0 is less than equal to epsilon is less than 1. So ये जो सीक्वेंस है, तो we see that ये इसमें मेन स्टेप है एक्चुअली. Summation k runs from
1 to infinity epsilon raised to power k minus 1 x and k is equal to 1 plus delta times x. Why? Because it implies now as k approaches infinity, which goes to 0 as k approaches infinity, epsilon जो है वो less than 1 है, तो ये 0 हो जाएगा as epsilon goes to infinity. It means that this जो है converges to this, and since x is a Banach space, and we have done no हमने यहाँ पे since सीधे लिख लो x is a Banach space. पहले तो convergence है, और अगर convergence है तो you know it would contain all its limits because it would be a Cauchy sequence in any case. तो ओके, ये हम यहाँ मानते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, which means that summation k runs from 1 to infinity epsilon k minus 1 divided by 1 plus delta x raised power nk is exactly equal to x, right? Which belongs to x, of course. And let zeta be z be equal to zi, I runs from 1 to infinity, where zi जो है उसको हम define करेंगे zi is equal to 0 if I is not equal to nk for any k. हमने subsequence ली थी ना, so these are some members of those x's, तो हमने इनको 0 कर दिया, अगर मतलब zeta I को हमने 0 कर दिया if that index does not match the index of the subsequence, और अगर मैच करता है तब हमने zi को लिया epsilon raised to k minus 1 divided by 1 plus delta if I is equal to x of k. So then अब हम दिखाएंगे then summation zeta I runs from 1 to infinity z है is equal to summation k runs from 1 to infinity, of course क्योंकि यही sequences हैं, बाकी तो सामने आएगी नहीं, epsilon raised to k minus 1 plus delta, but epsilon raised to 1 k minus 1 अब हम यूज करेंगे epsilon का वैल्यू. what was epsilon? epsilon लिया था हमने delta by 1 plus delta, why delta is non-negative, so it is delta by 1 plus delta raised power k minus 1 whole divided by 1 plus delta. ऐसे ही लिखें, it's a geometric progression, वैसे भी हम कर सकते थे, सीधे लिखेंगे फिर बाद में करेंगे. So this is 1 plus 1 by delta into 1 by 1 minus epsilon, which is equal to 1 by 1 plus delta, ये important है, into a construction इसमें थी by delta 1 plus delta, जो भी है ये 1 plus delta यहाँ पे, this is equal to 1. So what does that mean? That means this implies that ये जो zeta है इसका norm 1 है, so it means that zeta z belongs to PL1 such that अगर हम देखें t of z is exactly equal to x by definition, क्योंकि x is defined as this sum, हम सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके वेक्टर्स जो है साथ मल्टीपल, बाकी तो 0 है वो तो काउंट नहीं होंगे, तो this is what we would get. So what do we get? So it implies that px is contained in T of PL1. Oh yes, hence T of P of L1 is equal to px, which means that T is an isometry, is a linear isometry. The linear was straightforward. Yeah, you only upload T is an isometry since
since t is obviously linear. Oh, once we are done है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ. अब हम इस t की मदद से, I've got a linear isometry between L1 and X. So we claim that ये हमारा last one होगा L1 quotient kernel of T. Now kernel of T is a closed subspace, so this is meaningful. Is isometrically isomorphic to X. Yani X is isometrically isomorphic to a kernel, to a quotient of L1. That's what we wanted to prove. अगर हमने ये कर दिया तो we are done. Now that's rather straight. Now define. Main इसमें वो construction है, उसमें ना वो जो epsilons में हमें थोड़ा इधर-उधर हो गया, वो main idea है इसमें. बाकी सीधे follow होता है. Define F from L1 to, ये ऐसे नहीं division की तरह नहीं लिखना चाहिए. L1 by kernel of T to X. Now F is then by F of Z plus kernel of T is T of Z. Because T is a map from L1 to X. ठीक है ना? So T of Z जो है वो belong करेगा X में. So that's fine. It's all done. Now T is well defined and one-to-one. वो हम दिखाएंगे ऐसे straightforward. For if Z1 plus kernel of T is equal to Z2 or plus kernel of T, इसका मतलब है this is true if and only if Z1 minus Z2 belongs to kernel of T, which implies that T of Z1, यहाँ पे लिखना भी जरा मुश्किल है, is equal to 0, which implies that T of Z1 is equal to T of Z2, of course, which is true. और मैं एक step यहाँ लिखूँगा, F of Z plus kernel of T, Z1, is equal to F of Z2 plus kernel of T. Of course, इससे दोनों चीजें प्रूव हो गई. एक तो ये वन वे इस तरह से जाएंगे तो ये वेल डिफाइंड है, इस तरह से रिवर्स में जाएंगे तो ये वन टू वन है. तो हमें दिखाना है ये बाइजेक्शन है और लीनियर है, आइसोमेट्री है, वो तो है, तुम्हें पता ही है. So once we are there, so now we claim that also T of Z belongs to Bx जो हमने अभी किया था, if and only if Z belongs to Bl1. अभी किया था ना हमने क्या किया था, मतलब वही तो हमने दिखाया था कि T of Bl1 is exactly equal to Bx. We have already proved that. But this implies that अगर मैं लूँ ऐसे T of Z plus zeta dash also belongs to right. ऐसे लिखते हैं. Now for zeta dash belonging to kernel of T, it would imply that Z plus Z dash, मैं zeta बोल देता हूँ इसको, belongs to Bl1 if and only if T of Z belongs to Bx. रीजन ये है कि T of Z dash is 0, मतलब एक्चुअली होना चाहिए T of Z plus Z dash, है ना? Z dash T of, because T is linear and T of Z dash is 0, so I can just write it like this.
So which implies that z plus, yeah, ऐसे लिखना चाहिए, which implies that z plus z dash is less than or equal to 1 if and only if t of z is less than or equal to 1. ये सही है. For all c dash belonging to L of t. And taking infimum, so it would imply that infimum over z dash belonging to kernel of t norm of z plus c dash is less than or equal to 1 if and only if t of z is less than or equal to 1. So where are we? Now this is actually kernel of, this is the coset norm. So it implies that coset norm के हिसाब से अगर हम लिखें, it means c plus kernel of t is less than or equal to 1 if and only if f of, मैं इसको f लिखूंगा, f of z plus kernel of t is less than or equal to 1, because अगर मैं reverse में जाऊं, this is exactly f of z plus kernel of t. So this is what I get. So what does that mean? It implies that अगर मैं ऐसे लिखूं, f of the ball of L1 by kernel of t is equal to bx. Should I write bx? ये कहाँ पे है? हम कहाँ से कहाँ मैप डिफाइन कर रहे थे? वहीं पे है. f is a map from L1 to kernel of t to x, right? So it is bx. So which implies that since f is linear, implies that f is an isometry. So once we have done that, so therefore x is a nearly isomorph to a crucial space of L1. थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन बेसिकली इसका वही कंस्ट्रक्शन मेन स्टेप है, बाकी उतना डिफिकल्टी जितना ये दिखता है उतना है नहीं. So ये हमने किया था लास्ट टाइम. If f is linear और f sends unit ball to unit ball, नहीं sends नहीं, it is equal to इसकी image है दूसरे की unit ball. f suppose कोई भी हो, map from x to y, then f is an isometry. Right, f norm of fx is equal to norm of x. So that's straightforward. As long as f is linear. So let's leave it there. कल हम इसको, और वो जो एप्सिलॉन्स में है ना, वहां देखना कहाँ पे हमने कोई एप्सिलॉन से मल्टीप्लिकेशन वगैरह मिस कर ली, तो वो तुम चेक करोगे जब तुम उसका फेयर करोगे, क्योंकि यहाँ हम जब दूसरे पेज पे गए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई. ओके, लेट्स एंड इट हियर नाउ. कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? जल्दी नहीं, तुम तो सो रहे हो. कोई जाग रहा है बैग में? यस सर. हाँ, कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? चलो खुदा हाफिज, फिर इसको एंड करते हैं.